Hello friends, welcome you all on our today class and our today topic is logic gates. लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स जो यूनिट चल रही है हमारी उसके अंदर ये टॉपिक आता है लॉजिक गेट्स का। चलिए इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. The relationship between the input and the output is based on a certain logic. Based on this logic, gates are named as AND gate, OR gate or NOT gate. AND gate क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। A circuit which performs an AND operation which is shown in this figure, it has n input, n is greater than equal to 2 and only one output. ये देखिए a and b and c up to n, a and b and c up to n, a b c up to n. दिस इज द लॉजिक डायग्राम होता है। a और b कोई भी दो इनपुट हैं एंड y इज द आउटपुट। अब ट्रूथ टेबल को देखिए। ट्रूथ टेबल क्या कहती है? इनपुट्स a and b और आउटपुट इज a b. If inputs both a and b are 0 0, then output will be 0 for AND. If a is 0, b is 1, then a b will also be 0. If a is true and b is false, then output will also be false. If both inputs are true, then output will be true. In this case, we see that if both a and b values are true, then output will be true, otherwise it will be false. Clearly? Next is OR gate. A circuit which performs an OR operation is shown in this figure. It has n input, n is greater than equal to 2 and only one output, same as AND gate. ये इसका जो लॉजिक डायग्राम होता है और ये आपने एंड का लॉजिक देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। ये एंड का लॉजिक डायग्राम है, ये वाला एंड लॉजिक डायग्राम, एंड दिस इज द OR लॉजिक डायग्राम। तो आप डायग्रामों से देखकर भी डिफरेंस कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा है और ये कौन सा है। दिस इज द ट्रूथ टेबल। आप इसको 0 0 भी बोल सकते हैं, इनपुट्स जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, या फिर आप एज ए ट्रू फॉल्स करके भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ बोथ इनपुट्स आर false, then output is false. If any one of the inputs are true, then output will be true. If both inputs are true, then output is also true. It means that in the OR gate, if both inputs are false, then output will be false, and for other cases it will be true. NOT gate. NOT gate is also known as inverter. Inverse. It has one input A and one output Y. ये सिर्फ एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। दिस इज द लॉजिक डायग्राम। यहाँ पे देखिए ये सिंबल जो है उसके बाद में ये लगा दिया गया है, दिस रिप्रेजेंटेड द इनवर्स और नॉट गेट। दिस इज द ट्रूथ टेबल। इफ ए इनपुट्स इज फॉल्स देन आउटपुट विल बी ट्रू, क्योंकि उल्टा होना है, इसमें रिवर्स होना है। एंड इफ ए इनपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट विल बी फॉल्स।
दिस इज द नैंड गेट। ये जो गेट है ये 2 गेट से मिलकर बना है, नोट प्लस एंड, और इसको बोला जाता है नैंड गेट। नोट एंड ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज एंड ऑपरेशन, NAND operation. It has n input, n is greater than equal to 2 and 1 output. ये देखिए, ये है, ये तो हमारा एंड गेट हो गया, ये हमारा नोट गेट हो गया, और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये देखिए यहाँ पे ये शून्य लग जाता है, टाइप से, मतलब नैंड लग जाता है। ओके, अब देखिए क्या कहता है। ये इनकी ट्रूथ टेबल है, इसको देखिए। अगर आप ट्रूथ टेबल in this way you can understand, then for inputs a and b, first you make the and after that you can inverse for and. Okay, if inputs are 0 0, then and will also be 0, and for NAND gate it will be 1, then it is right. In same way you can follow the further steps. This is the NOR gate. This is also the combination of NOT plus OR gate. A NOT OR operation is known as NOR operation. It has n input, n is greater than equal to 2 and 1 output. Y is equal to A NOT or B NOT or C. This is the logic diagram. First you combine it OR and NOT gate, and after that it will be considered in this way. This is the truth table. Same on this way you can convert. This is the A and B are inputs, and then A plus B is the OR and A plus B ka inverse that is NOR gate. If the values of A is 0, B is 0, then A plus B is 0, and for inverse of this you will get 1. In same way you can practice for the next. Okay, now coming on the next topic, Xor Gate. This is the Xor Gate is a special type of gate. It can be used in the half adder, full adder, and subtractor. The exclusive OR gate is abbreviated as Xor Gate or sometimes as Xor Gate. It has n input, n is greater than equal to 2 and 1 output. Okay, good. लॉजिक डायग्राम, ये लॉजिक डायग्राम ये बस यहाँ इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया गया है कि यहाँ पे एक्सोर लगा दिया गया है। ये देखिए आप, ए ये जो प्लस हुआ करता था इसको हमने राउंड में ले लिया, ए प्लस बी, दिस इज द नोन एज एक्सोर गेट. If the inputs are 0 0, then output will be 0. If inputs are 0 1, it means value of B is true, then it will be true. And for 1 inputs of A is true and B is false, then it will be true, otherwise it will be false. For it means if both inputs either true or either false, the value, it means the output will be false, and for else if any one of inputs are true, then output will be true. This is the XOR gate. XOR gate is also a special type of gate. It can be used in the half adder, full adder, and subtractor. The exclusive NOR gate is abbreviated as XOR gate or sometimes as XOR gate. It has n input, n is equal to 2 and 1 output. This is the logic diagram. And truth table of this is this way. If
If both inputs are false, then output will be true, and if any one of input is true, then output will false, and if both inputs are true, then output will be true. In this case, you see here that if both inputs are either false or either true, output always will be true, both. And for any one of case, if either true or false, then output will be false. These are the differences. So this was our today class, which we have discussed about the logic gates. I hope you understand it clearly. Thank you very much.